I had all these questions that people watching business negotiation on primetime television is impossible, and we don't like to talk about money openly. That's how we are as a society. Really, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में ऐसा मोमेंट आ सकता है इंडिया में जब entrepreneurs मेन स्ट्रीम हाउसहोल्ड नेम्स बन जाए. आई थिंक इंडिया में इंडिया इज़ फंडामेंटली एक entrepreneurial कंट्री है. घर घर में entrepreneurs हैं. अब वो सेलिब्रेट हो रहे हैं. यंग 8 साल की लड़की से बात करती हूँ जो मुझे बोलती है मुझे आपकी तरह entrepreneur बनना है. मेरे लिए लाइक दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स मोर, बिकॉज ग्रोइंग अप I never had women entrepreneurs as role models. So being an entrepreneur has been the toughest aspect of my life, way tougher than being a mother. It's a huge privilege to be a part of season 1 of Shark Tank, because I agree, when the team first came to me saying that Shark Tank hum India mein lana chahte hain, I had all these questions that India mein people watching business negotiation on primetime television is impossible, and we don't like to talk about money openly. That's how we are as a society. So discussing valuation to dur ki baat hai, but I think season 1 was able to establish that, as the show now says that Bharat samjhega ab business ki asli value, and I think that really came out, and business became a household conversation. And I have started up about 15 years back when entrepreneurship was like unemployment, कि उनको कोई जॉब नहीं मिली तो ये अपना कंपनी चला रहे हैं. And you had like zero respect, like people would think twice before marrying their daughters to a entrepreneur, thinking that the future is risky. But I feel that it's all getting changed now. In the last 6 months I've met so many young kids whose parents come and talk to me saying that they watch Shark Tank, they're so inspired to start their own business. And they're proud. They're not telling their kids that don't start up, you'll fail. I think that entire conversation around entrepreneurship being super important for India's future growth story and becoming an aspirational career, I think that's all happened because of Shark Tank. From smallest of towns, people are now coming and presenting their businesses. And I think I feel very, very lucky that I got to be a part of season 1 and now season 2. And I feel season 2 is going to be like bigger and better. Of course, any series if you see, season 2 is always the toughest, because season 1 though had no prior expectation. Now season 2 there's already a bar which you need to raise. So, going into season 2, I think all of us felt that pressure. But the quality of pitches, the quality of deals that have happened in season 2, I am very relieved, because I feel that it was far superior to season 1. And all of that is going to show when the actual show airs. And I feel that it's not... Now I feel relieved that I think people will be super excited and as gung-ho over season 2 as they were of season 1. बहुत झगड़े हुए हैं. I would say सीजन 1 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं इस बार, ज़्यादा झगड़े भी हैं, ज़्यादा डील्स भी हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, सब ज़्यादा है. आई थिंक इंडिया में हमेशा लाइक ओनली फिल्म स्टार्स पॉपुलर होते थे, एंड इफ़ एट ऑल नेक्स्ट वाज क्रिकेटर्स. एंड मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में ऐसा मोमेंट आ सकता है इंडिया में जब entrepreneurs mainstream household names ban jaye. So I think very lucky to be a part of this big change that is coming. I think इंडिया में इंडिया इज़ फंडामेंटली एक entrepreneurial country है. घर घर में entrepreneurs हैं. अब वो सेलिब्रेट हो रहे हैं, एंड जब ऐसा कुछ सेलिब्रेट होता है तो मोर entrepreneurs ग्रास रूट लेवल पे क्रिएट होते हैं, एंड उससे जो इम्पैक्ट आएगा इंडिया के GDP एस्पिरेशंस ऑफ गेटिंग टू 5 ट्रिलियन क्विकली, वो अनप्रेसिडेंटेड है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वी आर फाइनली सेलिब्रेटिंग entrepreneurs. And of course, for us as the sharks who managed to become these household names, I think it's a huge privilege and a huge responsibility that we don't want to let down the trust of all the fans.
I think yes, definitely. Most of it is super positive because, like I said, that moment. मतलब मेरे लिए जब मैं एक young 8 साल की लड़की से बात करती हूँ जो मुझे बोलती है मुझे आपकी तरह entrepreneur बनना है, मेरे लिए like that's it. You know, nothing else matters more because growing up, I never had women entrepreneurs as role models. And now these girls have Namita, they have me, they have all the women entrepreneurs who are pitching in the show. And to be a part of that change means a lot to me. So I'm very happy. Of course, कभी कभी ऐसे होता है that you know airports पे, malls पे बहुत सारा selfies, fan moments in terms of selfies, etc. And you're not ready for it. Yeah, sometimes you know you feel conscious because people are looking. तो थोड़ा मतलब the adjustment takes time. But I think you know. आई थिंक यू नो जैसे अमन काफ़ी बार बोलता है कि वो यू नो मोहल्ले वाली आंटी तो तभी इम्प्रेस होती है जब आप टीवी पे आओ तो दे गेटिंग दैट यू नो गेटिंग पीपल टू टॉक अबाउट इट आई थिंक इज़ इट्स जनरली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी या सो जब शार्क टैंक सीजन 1 एयर हो रहा था तो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रोलिंग दैट आई एक्सपीरियंस वाज दैट यू नो लोगों ने एक मीम बनाया था वेयर मेरी 3 पिक्चर्स लगाई थी और एक राजू की मम्मी फ्रॉम 3 इडियट्स की पिक्चर एंड देन दे आर लाइक CEO शुगर कॉस्मेटिक्स एंड वो मीम लाइक बहुत वायरल हो गया था तो पहला 1-2 बार तो मुझे लगा ओ माय गॉड पीपल आर सो लाइक मीन यू नो ऐसा मीम बना रहे हैं बट देन एक्चुअली मेरी टीम का आइडिया था उन्होंने बोला कि आज हम 2022 में हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप ट्रोल होगे एंड उससे डरना या भागने से कोई फ़ायदा नहीं है यू हैव टू ओन everything about you and including you know जो trolling होती है about the way you look or you know and that I think like led to me creating that meme. It was my team का idea and जब वो meme बनाया and you know lot of people saw that meme. I'm very happy because you know finally something that was could have bothered me and could have impacted my mental health. I owned it and I responded to it and I'm now I don't mind it. I myself joke about it कि मैं राजू की मम्मी की तरह दिखती हूँ. I'm very proud of my journey, not just as an entrepreneur but also as a mother. I feel that बच्चे learn करते हैं from what they see, not what we tell them. And the fact that my kids see me going through working hard, being ambitious, it's going to ensure that they also grow up wanting to work hard and become ambitious. And as a woman entrepreneur काफ़ी struggles थे in terms of fundraising बहुत मुश्किल था. हम जिस कैटेगरी में थे उसमें वेंचर कैपिटल्स को इन्वेस्ट ही नहीं करना था तो बहुत 100 से ज़्यादा वेंचर कैपिटल ने हमें मना किया था. एंड मेरा लाइक एल्डेस्ट सन मेरे 2 बेटे हैं उसमें मेरा बड़ा वाला इज़ एज ओल्ड एज शुगर. तो मेरे दोनों बच्चे हुए ड्यूरिंग माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एंड वो बहुत डर लगता था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर वो क्या कहेंगे कि आप अपना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप अपना फैमिली पे फोकस करोगे तो बिज़नेस का क्या होगा. तो हर वुमन का लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज होता है वो गिल्ट कि घर को टाइम दें कि बिज़नेस को टाइम दें दोनों को कैसे बैलेंस करें. घर में है तो वर्क का गिल्ट वर्क पे है तो घर का गिल्ट. But I feel that like all of us go through that journey and I went through that journey and spoke about it and in my team there are more than 2,500 women and I feel that for each one of them now seeing my struggles and seeing that it's normal to have the guilt to have the struggle to have those failures to have the setbacks and still keep fighting and then turn things around gives hope. And finally, that's all we all need, right? We need hope that things will get better. And, I feel that my story has been one of many failures, many struggles, but then something working out and then really taking off. And that hope that I'm able to give women that, they can exactly be in my shoes, go through their set of struggles, but come out stronger. And what they need to do to overcome those struggles. I feel that, the role models that I didn't have, I want to be for the next generation. सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए हुआ है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर क्योंकि मैंने लाइक 2-3 बिजनेसेस स्टार्ट किए थे जो सक्सीड नहीं किए थे. तो शुगर के पहले मैं एक्चुअली उस मोमेंट पे थी जब मुझे लगता था दैट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक बाय चूजिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज यू ऑलवेज थिंक दैट यार ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स आर लाइक दिस एंड I started wondering whether I was meant to be one.
maybe I wasn't good enough to be an entrepreneur. Entrepreneurs need to be a certain way, which I wasn't. And that self doubt and, like feeling like you're not good enough is much tougher than any other physical financial struggles, because at the end of the day you spend most amount of time in your own self, right, your own mind. So दुनिया जो भी कहे, अगर आप अपने लिए अपना हीरो हो, then that's good enough. But I wasn't in those phases, and for me that was the toughest part. So being an entrepreneur has been the toughest like aspect of my life, way tougher than being a mother and being a woman. And but I'm glad that I stuck around, and I feel that now I know that entrepreneurs come in all shapes, sizes, genders, educational backgrounds, age backgrounds, cities, सब जगह से एक अच्छा entrepreneur आ सकता है. बट 15 साल पहले तो ऐसे लगता था कि entrepreneur मतलब you have to be from certain college, like an ambitious visionary sounding man like a Steve Jobs, because role models में diversity नहीं थी. पर आज वो diversity है. And that change I've seen happen in my own journey of 15 years of entrepreneurship. Well, देश बदल रहा है और देश के साथ बदल रही है देश की लड़कियाँ. तो I mean, of course, only 14% आज भी women entrepreneurs हैं इंडिया में. Only 1.5% को funding मिलती है. तो numbers तो अभी काफ़ी कमज़ोर हैं. पर जो चेंज आ रहा है, आप देखें पिछले 2-3 साल में कितनी सारी women led companies ने IPO किया, कितने सारे women led unicorns बने. तो ये जो चेंज आ रहा है, इससे जो यंगर जनरेशन ऑफ गर्ल्स है उनका एम्बिशन बढ़ेगा, उनकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगी. तो अब अगले 10 से 20 साल आर गोइंग टू बिलोंग टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये एक जब कहीं आपका नंबर इतना कम होता है तो वो उसको बेस इफेक्ट बोलते हैं, तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो सकता है. मतलब आप सोचिए, just a 10% change in the percentage of participation of women in the workforce का $800 billion का impact हो सकता है इंडिया की GDP पे. So this is just a change waiting to happen, and I'm very happy to be part of this change where the next decade will belong to women entrepreneurs. So all my deals and some of them that I didn't do, सब में I've been in touch. उनको काफ़ी mentorship की ज़रूरत है, because थिंग्स काफ़ी चेंज हो गई हैं लास्ट 12 महीने में, क्योंकि मार्केट में फंड रेजिंग मुश्किल हो गई है. काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स जो स्केल कर रहे थे उनको अभी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना पड़ता, तो उनको ज़रूरत पड़ती है. मैं उनका ब्रांडिंग में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी मदद करती हूँ. तो मतलब मैंने 15 डील्स किए थे लास्ट सीज़न में, एंड ऑलमोस्ट सबके साथ मैं टच में हूँ. सो मेरा मैसेज वही है कि डेफिनेटली वॉच एवरी सिंगल एपिसोड ऑफ शार्क टैंक सीज़न 2, क्योंकि 200 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, 300-400 इनक्रेडिबल फाउंडर्स. उनमें से एक एक की कहानी इतनी यूनिक एंड इंस्पिरेशनल है कि इसके बियॉन्ड आपको रोल मॉडल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. तो आप उनकी कहानी देखिए, उससे सीखिए, प्रेरित होइए, एंड फिर कुछ बड़े सपने देख के करके दिखाइए.